Assalamualaikum dear students, class 12th, यूनिट एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस यूनिट में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ख़त्म किया है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमने पढ़े इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देन वी हैव प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक acids. Now, introduction. Now, what are carboxylic acids? Carboxylic acids, they are the organic compounds which contain COH as the functional group are called as the carboxylic acids. These are the compounds. These are the organic compounds containing COOH functional group. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आपने याद रखा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो उन ही कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन COOH एज द फंक्शनल COOH functional group are called as carboxylic acids. Now we have classification of carboxylic acids. Classification of carboxylic acids में हम इनको classify करते हैं into two major important categories. Classification of carboxylic acids. क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है COOH फंक्शनल ग्रुप, इसके दो पार्ट से, इस फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट से, दैट C डबल बॉन्ड O पार्ट एंड OH पार्ट। C डबल बॉन्ड O पार्ट जो है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल, एंड हाइड्रोक्स OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सल। सो इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्ब पार्ट जो है दैट्स फ्रॉम द कार्बोनिल, कार्ब and oxal from the hydroxyl. So these are called as carboxylic acids. So याद आपने रखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है कार्बोनिल पार्ट एंड दूसरा है हाइड्रोक्सिल पार्ट। कलेक्टिवली दे फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्ब पार्ट कहाँ से आया है? कार्बोनिल से आया है कार्ब, और ऑक्सल पार्ट कहाँ से आया है? हाइड्रोक्सिल से। सो दिस वाज something regarding the functional group COH functional group. Now we have classification of the carboxylic acids. Carboxylic acids are broadly classified into two major categories. One is aliphatic carboxylic acids, and number second aromatic carboxylic acids. Now what are aliphatic carboxylic acids? Aliphatic carboxylic acids are those carboxylic acids in which जहाँ पर COH ग्रुप जो है attached to an aliphatic chain, alkyl group, उनको हम कहते हैं aliphatic carboxylic acids को. Aliphatic carboxylic acids are the carboxylic acids where COH functional group is attached to an alkyl chain or an alkyl group or an aliphatic group. Those carboxylic acids are called as aliphatic carboxylic acids. While as aromatic carboxylic acids are those in which the COH group जो होता है it is attached to an aromatic ring. उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कहते हैं aromatic carboxylic acids. So aliphatic carboxylic acids are the carboxylic acids in which COH group is attached
carboxylic acids, in which aliphatic carboxylic acids are the organic compounds in which COH group is attached to an alkyl chain or aliphatic alkyl group or aliphatic chain. For example, RCOH, इस R के बदले में क्या लिखूंगी CH3COH, इसी तरह से C2H5COH इज अटैचेबल। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल है CH2COH and COH. These are all the examples of the aliphatic carboxylic acids. Aliphatic carboxylic acids are the acids carboxylic acids जहाँ पर COH group जो है functional group that is attached to an aliphatic group or that's attached to an aliphatic chain or the alkyl group. Those acids are called as the aliphatic carboxylic acids. Now we have aromatic carboxylic acids. Aromatic carboxylic acids हम वो carboxylic acids है जहाँ पर COH group जो है that is attached to an aromatic ring are called as aromatic carboxylic acids. Number second, aromatic carboxylic acids in which COH group is attached to an aromatic ring. वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फॉर एग्जांपल वी हैव बेंजोइक एसिड COH. We have another that's called as the phthalic acid. These are the examples of the aromatic carboxylic acids जहाँ पर COH group जो है that's attached to an aromatic ring, उनको हम कहते हैं aromatic carboxylic acids. Now, another classification depending upon the number of functional groups, number of the COH groups in a carboxylic acid. Carboxylic acids are of following types. Carboxylic acids जो है depending upon the number of COH groups. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने COH ग्रुप्स हैं, एक है, दो है, तीन है या मोर देन 3 है, तो on that basis we have these carboxylic acids are classified into the following categories. Number first, depending upon the number of COH groups, carboxylic acids जो है they are of following types. Depending upon the number of COH group in a carboxylic acid, carboxylic acids are of following types. इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने COH ग्रुप्स हैं, ऑन दैट बेसिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. नंबर फर्स्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है those carboxylic acids which contain only one COH group are called as the monocarboxylic acids. Number first है they may be aliphatic or they may be aromatic. Monocarboxylic acids, they may be aliphatic monocarboxylic, they may be aromatic monocarboxylic acids. Carboxylic acids. So monocarboxylic acids are those carboxylic acids which contain only one COH group, which contain
only one COOH ग्रुप, जिनमें खाली एक ही COH ग्रुप होता है, उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक. Such carboxylic acids are called as monocarboxylic acids. They may be aliphatic, they may be aromatic. For example, CH3COH, ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें खाली एक ही COH ग्रुप है. इसी तरह से बेंजोइक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी एक ही है COH ग्रुप. इसी तरह से है C2H5COH. These are the examples of the monocarboxylic acids. So monocarboxylic acids are the acids which contain, or the carboxylic acids which contain only one COH group are called as the monocarboxylic acids. Now we have dicarboxylic acids which contain two COH groups are called as the dicarboxylic. Similarly, we have tricarboxylic acids which contain which contain more than three, or which contain many COH groups are called as polycarboxylic acids. So we have important number second, that's called as the dicarboxylic acids, which contain two COOH groups. For example, COH and COH. This is called oxalic acid. Oxalic acid. Similarly, we have CH2, COH and CH2. This is called a malonic acid. Malonic acid. Similarly, we have CH2, COH, CH2, COH. This is called succinic acid. Succinic acid. Similarly, we have aromatic dicarboxylic acids. We have COH and COH. This is called as phthalic acid. Phthalic acid. So this is the second category, that is the dicarboxylic acids. वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें दो COH ग्रुप्स होते हैं, तो वो कार्बोक्सिलिक, सच कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड एज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. So dicarboxylic acids are the acids, carboxylic acids which contain two COH groups are called as the dicarboxylic acids. Similarly, we have tricarboxylic acids which contain three COH groups. We have the polycarboxylic acids which contain many COH groups are called as the polycarboxylic acids. Now we have the another important one in this, that is the nomenclature of carboxylic acids. Nomenclature of carboxylic acids. We know that we have the common system of nomenclature and we have the IUPAC system of nomenclature. Common system. According to common system of nomenclature, their name is obtained from the source. इनका नाम हम derive करते हैं from their Greek or the Latin source from which these are obtained. For example, the formic acid, which is obtained from the name of formica. Formica is for ants, red ants. इनमें होता है एक acid, red colored का acid होता है उनमें, that's called as the formic acid. So common name जो है इनका, that is derived from the Greek or Latin name of their source. So their जो इनका common name होता है वो हम derive करते हैं from the Greek or the Latin name of their source. इसी तरह से है, for example, the formic acid. For example, formic acid from formica, that's ants.
इसी तरह से H2 एसिटिक एसिड का नाम जो है एसिटिक एसिड का नाम जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम H2 एटसेट्रा। सो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कॉमन नेम इनका। जो कॉमन नेम है आपको इतना ही याद रखना है कि इनका कॉमन नेम जो है वो हम डिराइव करते हैं फ्रॉम देयर ग्रीक और द लेटर नेम ऑफ देयर सोर्सेज सच एज द फॉर्मिक एसिड का जो ये फॉर्मिक एसिड जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मिका। इसी तरह से एसिटिक एसिड जो नेम है एसिटिक एसिड का that is derived from the H2 etc. Now the important one is that is the IUPAC nomenclature of the carboxylic acids. IUPAC, because their IUPAC name is derived from alkanes. IUPAC system of nomenclature. Their IUPAC name is derived from alkanes. कैसे? By replacing the terminal E by oic acid. So their name is alkanoic acids. Alkanoic acids. For example, HCOOH. अब इसका नाम क्या है? It is derived from the alkane. Alkane में alk number of carbon atoms कितने हैं? 1. So it is methane. मीथेन का E हम रिप्लेस करेंगे बाय ओइक एसिड को. इट इज द नेम ऑफ दिस एसिड इज मिथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड. इसी तरह से है CH3COH. अब इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स है. तो सो इट बिकम्स इथ एंड डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन उसको ANE ईथेन. ईथेन का E हम रिप्लेस करेंगे बाय ओइक एसिड, ethanoic acid etc. Similarly we have the other examples as well. We have CH2 CH, COH and CH3. अब यहाँ पर आप देखो कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 ब्यूट एंड इट इज ANE ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड. इसी तरह से अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो उनको हम कहते हैं डायोइक एसिड्स, अल्केन डायोइक एसिड्स. इसी तरह से है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है COOH एंड COH. अब कितने कार्बन एटम्स है? 2. ईथेन एंड इज डाइओइक एसिड और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ईथेन डाइओइक एसिड. Similarly we have CH2COH which is called as succinic acid in the common system of nomenclature, but in the IUPAC it is 4 carbon atoms, so it is bute and 2 carboxylic acid है dioic acid. This is regarding the nomenclature of the aliphatic carboxylic acids. Now we have the nomenclature of the aromatic carboxylic acids. Aromatic carboxylic acid का जो first member है that's called as the benzoic acid, and the name of all the other these aromatic carboxylic acids that is derived from the benzoic acid. Benzoic acid. This is benzoic acid and all the substituted ones are substituted जब हम other hydrogen atoms, when other hydrogen atoms are replaced by the other groups, substituents are the functional groups, that is called, those are called as the substituted benzoic acids. Their name is also obtained from the benzoic acid. For example अगर मैं यहाँ पर एक hydrogen atom को replace करूँगी by CH3
It is called as, it is the functional group number, this is the functional group, it is 1 carbon atom, this is second carbon, it is 2-methyl benzoic acid. Similarly, we have COOH and OH. This is 1, 2 and 3. This is 3-hydroxy benzoic acid. This is regarding the nomenclature of the carboxylic acid. So nomenclature में हमने पढ़ा, we have the two systems of nomenclature. We have the common system of nomenclature and we have the IUPAC system of nomenclature. In the common system, their name is derived from the source, Greek or the Latin name of their source, while as according to the IUPAC system of the nomenclature, their name is derived from alkanes by replacing the terminal E of alkanes by oic acid. So these are called as alkanoic acids. This was all about the introduction of carboxylic acids, classification of carboxylic acids and nomenclature of carboxylic acids. Inshallah, in the next video lecture we will go through the preparation of carboxylic acids. Thank you so much.